Hello guys and welcome back to my YouTube channel Edu Talk, and I will be talking about definitely education from the doctor's perspective, doctor as in PhD. And since my series is right now related to research, so I'm sticking to it right now. I'll be talking about research only, how to do it and how to easily do it without getting into the web of technicalities too much. But I have already told you that I am from a legal background, so I will be teaching about how to do legal research. And again, I am saying it doesn't mean that you should not follow my channel, because if you are following, you will be understanding and applying it to the various other research areas as well. So in our last topics, we have discussed about the importance of research. We have also talked about the various subtopics which should be included in your research design. Now I need to tell you what are the types of research, because as I told you, types of research are also important to understand. क्योंकि आप जब रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं. आप जब ये जानेंगे देन यू विल बी एबल टू अप्लाई अ बेटर पर्सपेक्टिव टू इट. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लर्न दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च. और एक बार आपको वो क्लैरिटी आ गई कि आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उससे रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट हियर. सो let's start with the types of research and understand that आप किस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं. If you want, you can give me your topics name in the chat box. I will try to tell you ये किस तरह का रिसर्च है. Maybe in some other sections when we are discussing the other aspects of research. So if you talk about types of research, मैं अभी सिर्फ सोशल लीगल रिसर्च की बात कर रही हूँ. इनफैक्ट सोशल रिसर्च की बात कर रही हूँ मेजरली. तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो कि पहला काइंड है, और नाम इट सेल्फ सजेस्टेड व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर some phenomenon, maybe that why it is happening or how it is happening. So you have to find out that supposing there is a phenomenon which is happening around, आप जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के रिसर्च करते हैं. उसमें आप जनरली कंक्लूजन आप इस बेसिस पर नहीं देते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हैं. आप उसको वाई का आंसर करते हैं कि क्यों जो है, सपोज़ करो क्यों एम्प्लॉइज़ जो हैं वो EPF खोलना नहीं चाहते हैं इवन तो वो उनके बेनिफिट का है. तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं रीज़न. तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों ये हो रहा है. और ये कई बार ऐसा होता है, जैसे जो मैनेजमेंट वाले रिसर्चर्स होते हैं या फिर जिनको मार्केट रिसर्च करना होता है, जनरली दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर मे बी वन प्रोडक्ट बीइंग accepted by many people and another product not accepted by many people, even though maybe in the sampling it was good enough but now it is not being accepted. तो आप रीज़न जानना चाहते हैं, और एक बार आप रीज़न जानते हैं तो मे बी आप नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि उसके आप सोल्यूशंस दें, यानी नेक्स्ट रिसर्च आप ये कर सकते हैं. तो एक तरह से कहा जाए तो ये पायलट स्टडी की तरह भी होता है, वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई. सो वंस यू आर नोइंग वाई, आपको हाइपोथेसिस बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि from your pilot study you have come to understand the reason, and that reason gives you a good hypothesis to be created. Next is the historical research, where you are actually talking about why something is happening, and from historical perspective you are coming to something as a reason. जैसे आप अगर कभी कोई नया लॉ आने वाला है, उसके पहले क्या रहा था हिस्टोरिकली, और वो हिस्टोरिकली होते हुए वो उसने वो रीज़न क्या रहा उसके आने का, और वो आया तो क्या क्या हुए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी नए कंज्यूमर एक्ट की तरफ हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि उसमें जो पर्सनालिटीज़ हैं एज फिल्म फ्रेटर्निटी पर्सनालिटी या फिर मे बी टेलीविज़न पर्सनालिटी और सुपरस्टार और गुड क्रिकेटर, जब वो किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं
So initially they didn't have any much kind of a liability to them, but now after so many cases which have happened, be it Maggie or similar to that, now there is a new change in the laws which is telling that now they need to take certain responsibility. Due diligence falls on their owners, that they have to take due diligence to understand why this particular product is good or not good for the consumers. So if they are knowing it, they become more vigilant towards endorsing any product. So now if they have a liability, obviously they are going to take proper care about that. Then there is another one which is called analytical studies. Now analytical is again very important, because you are analyzing something. अब जैसे कि अब recently there was a case where four of a family were trying to cross borders from Canada to US, and they actually could not survive the cold weather of minus 35 degrees Celsius in the harsh weathers of Canada, and they died. So here the question arose, why? उनको क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या उनके पास खाने के लिए नहीं था, या उनके पास क्या नहीं था. बट देन यू कम टू अंडरस्टैंड दैट दे हैड टू पे more than 1.5 crores to do this kind of work. So if they have 1.5 crores to spend on this, then there is definitely something else which is मोटिवेटिंग देम. तो आप एनालाइज करते हैं क्या हमारे लॉ में कमी रही है, वाई इज़ दिस अमेरिकन ड्रीम में बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम मोर देन लाइव्स. दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग इलीगल वेर यू डोंट वांट टू. एनी नॉर्मल पर्सन वुड नॉट वांट टू डू समथिंग इलीगल, especially when you are out of your country, you are leaving your country, you are leaving your people to cross border illegally, and you are cooking up all those things just to cross and go to some place where you are staying illegally and where you could stay in your own country very comfortably. So this question again is pertinent question, and you analyze it. आप उस वक्त बाकी laws देखते हैं, international laws देखते हैं, क्या कहते हैं international laws, what are the responsibilities of a nation, what is the responsibility of the foreign countries in these circumstances. Sometimes you might want to know the jurisdiction which will be involved on those people who are involved in this. तो ये है आपका analytical. Then certain questions which are like exploratory. क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ कंपनी लॉ, तो उसमें कंपनी को इस तरह के बाउंड्स क्यों दिए गए हैं. वेन एवर दे आर कलेक्टिंग कैपिटल्स फ्रॉम people like share capital, then why those kinds of bonds have been given. या फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स अगर अलग हैं तो क्यों हैं, उनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं. देन यू गो फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. देन देर आर अदर स्मॉलर काइंड्स ऑफ रिसर्च वेर यू मे बी कंबाइन ऑल ऑफ देम. कभी कभी आप जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ है, पर वो होने के बावजूद क्यों ये गलतियाँ हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव राइट टू एजुकेशन, स्टिल many people are unable to even write their name. Now there is a recent research which has happened which is saying that after 22 months the kids who are in junior classes have even forgotten to write their own names. They have become that much illiterate. तो क्या कमी रह गई. What is the demerit or the wrongs of a online class that led to this issue. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप जानने की कोशिश करते हैं. Sometimes when you are finding out that this is the reason, because as we are saying today, the new world is going towards all things online. Now it has become possible to convert your offline work into an online work, and the world is fast changing towards that mode, because we can see there is a possibility. It is actually safeguarding many other things, not only the employers, the land and everything else. So people are bound to do that. So once you are knowing that this problem exists, that people are unable to learn in online medium, then you might want to find out the solution. Then there are other kinds of research, for example comparative research. अब इसमें आप कई बार हमारे अपने कुछ कमियां रहती हैं जिनको हम देखते हैं कि दूसरी जगहों पे कमी नहीं है, तो आप जानने की कोशिश करते हैं एक्सक्यूज़ मी, कि उधर क्या ऐसा है जिसकी वजह से कमी नहीं है, या फिर
उनके क्या लॉज हैं और हमारे क्या लॉज हैं, और उनके लॉज होने की वजह से उन्हें क्या बेनिफिट्स हैं या हमें क्या है, तो वो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है. दिस इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ अ रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, किसी और कंट्री में, इवन दो इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन, वहाँ पे एक्सेस टू मेडिसिन ईजी है, वाई इट इज़ हार्ड फॉर अस. तो ये आप कभी कभी कंपैरेटिव स्टडी से भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्चेस, एंड टाइम एंड अगेन whenever I am giving examples, I'll come back to this to make you understand what are the which kind of research is that. Whenever I am giving example, I will tell you, okay, this is an exploratory kind of a research, or it's an historical research, or it's a comparative research. Again, I would say that it is never like there is only one kind of research which you are following. It might be a mixture of two or three kinds of research. So let's meet the next time and discuss these things, researches in more detail. Till the time, happy researching. Thank you all.